So here is the batch now, array 2. Okay. So accept any 10 numbers and display the numbers in reverse direction. This is the first program. ARR of 10. You can take I here and printf. तो कल मैंने तुम लोगों को थ्योरी बताया था. See, I told you theory yesterday कि array मतलब क्या? Array is a collection of similar data type. तो इसका मतलब क्या होता है कि when you declare the array here of the size 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो जब तुम लोग यहाँ पे अगर array को डिक्लेयर करते हो तो ऐसे continuously you will get 10 blocks. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 है ना. You will get the 10 blocks. तो ये तो कल मैंने तुम्हें बताया था है ना. ये याद है कि नहीं सबको? This is called as index. ठीक है, this is called as the index. So enter any 10 numbers in array. तो यहाँ पे नंबर लेने के लिए हमें फॉर लूप यूज करना है. I starts from 0. I लेस देन होगा 10 से, तब तक I को क्या करो? प्लस प्लस करो. तो array t.c accept any 10 numbers in array. तो I सबसे पहले 0 पे है, तो मतलब I मेरा यहाँ पे है. Here is the I. तो 0 लेस देन है 10 से, तो पहले scanf %b ampersand ARR of I. तो फर्स्ट नंबर ले लिया, array के 0 में दे दिया. फर्स्ट नंबर इज 10 here. ठीक है, first number is the 10 over here. After this, I becomes 1. 1 less than 10. Read the next number. Store at the index 1. I will move to the next position, and here is the 20. I becomes 2. 2 less than 10, and next is the. I will move to the next position, and here is the 30. Then I becomes 3 here. 3 less than 10, and the next element is at which position? This position. Here is a 40. I will be here, and 4 less than 10. 4 less than 10. Store the next value at the fourth index. So I यहाँ पे चला गया and store the value here 50. Okay, उसके बाद I होगा अपना 5. 5 less than 10. मैं एक काम करता हूँ, I'll take a 5 only. Take the 5 instead of like तो 4 हो गया, 5 हो गया, तो 5 लेस नहीं है. स्टॉप द लूप. ठीक है, तो 5 पे I चला गया, तो ये लेस नहीं है, तो स्टॉप द लूप. दिस इज क्लियर? प्लीज रिप्लाई एवरीबडी. I 0 पे है, 0 लेस देन है 5 से, पहला नंबर आएगा 0 पे. I becomes 1. 1 लेस देन है 5 से, नेक्स्ट नंबर आएगा 1 पे. I becomes 2. 2 लेस देन है 5 से, नेक्स्ट नंबर आएगा 2 पे. ठीक है, तो यू कैन स्टोर 5 नंबर्स हियर. ठीक है, you can take the 5 numbers here. Now let's print this data in the reverse direction. ठीक है, so let's print this number in reverse direction. तो कैसे प्रिंट करेंगे? चलो पहले नॉर्मल प्रिंट करते हैं. printf elements in array are for I equal to 0, I less than 5 and I plus plus. तो यहाँ पे लिखो printf के अंदर %5d comma ARR of I. 5d मतलब क्या होता है? स्पेस आएगा. I 0 पे है. लेट्स अंडरस्टैंड अगेन. I फिर से एक बार 0 पे आ गया. याद रखो I is here right now, 0 इंडेक्स. प्रिंट करो एरे के 0 को. कौन है वहां पे? 10. यहाँ पे I हो गया प्लस प्लस. I is here right now. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 20. I becomes 2 here, 2 less than 5. यहाँ पे आएगा 30. I becomes 3 here. नेक्स्ट आएगा यहाँ पे 40. I becomes 4 here. नेक्स्ट आएगा यहाँ पे 50. So in this way you can print all the numbers. So
I is 1, print 20, then I becomes this one, print 30, I becomes 3, print 40, I becomes this one, print 50. Understood? Then 10, 20, 30, 40, 50. Okay, I want this number in a reverse direction. Printf elements in a reverse direction are. तो यहाँ पे for loop लिखो I starts from 4, I greater than equal to 0, I minus minus. Okay, तो इससे क्या होगा? I तुम्हारा 4th पे आ गया अभी. Your I is at which index right now? At 4th index. So I is at this index. तो पहले इसको प्रिंट करो 50 को, ठीक है? Printf %5d and comma error I. तो क्या किया हमने यहाँ पे? I 4 पे है, 4 ग्रेटर देन 0 से पहले 4 वाले को प्रिंट करो. कौन था वहां पे? 50. देखो तो पहले ये प्रिंट हो जाएगा. After this I becomes 3 greater than 0. थर्ड वाले को प्रिंट करो. कौन है वहां पे? थर्ड पे. इसको लेके आए यहाँ पे. ये प्रिंट होगा 40. कौन प्रिंट हो गया? 40. I becomes 2 greater than 0. प्रिंट कर दो इसको 30. क्या प्रिंट होगा? 30. I becomes 1 here, 1 greater than 0. Print the value which is at the index 1, that is 20. I becomes 0, 0 is equal to 0. Print the value 20 के बाद 10 वाला value. So in this way you can print all the numbers in reverse direction. Okay, this is clear. Please reply everybody. Accept the 5 number, display the number and display number in reverse direction. इथपर्यंत कळलंय सगळ्यांना? Please reply. So here you have, okay, like you will get your data in the reverse direction. Okay, so let's go to the next example. Save as code.c. So take the 10 numbers now. अभी शुभम has asked one question कि सर हम लोग इसको यूजर से ले सकते हैं क्या? Can we take the size of the array? No, you cannot take the size of array from the user, but you can do one thing. Define max. हाँ तो देखो ना, उसके लिए क्या करना है? यहाँ पे max लिखो equal to 20 suppose. Max is equal to what? 20. और यहाँ पे लिखो max. इसका मतलब क्या हो गया कि you have allocated a memory for the 20 actually, but you don't want 20 elements. तो यहाँ पे तुम लिखो printf में how many numbers do you want in a array? Max size is 20. % d sign n. So now you can say n equal to 5. तो तुम्हारा ये जो लूप है वो n तक घूमेगा अभी, ठीक है? n तक ही ये प्रिंट करेगा. वैसे यहाँ पे अभी n-1 लिखेंगे. अंडरस्टूड शुभम? तो सी प्रोग्रामिंग में ये प्रॉब्लम है कि तुम्हें स्टार्टिंग में साइज डिक्लेयर करना पड़ता है. तो आगे जाके कुछ कंसेप्ट सीखने वाले हो तुम, वहां पे नो नीड टू यूज दिस. ओके, ते चालणार आहे. इकडे जर 20 लिहिलं ना तरी पण चालेल, पण काय इथे काहीतरी नवीन शिकतो आपण की असं पण करता येतात कॉन्स्टंट डिक्लेअर. कारण की ही साईज परत इथे कधी पण व्हॅल्यू नसते लिहायची. बेसिकली असा रूल आहे की यू शुड डिक्लेअर द व्हेरिएबल इन फ्युचर इफ यू वॉन्ट अ साइज 50. So instead of changing here, you can change here. Understood, Namrata? Instead of changing here, you should change here. Okay. Compile the code and run the code now. How many numbers do you want in array? So I say I want the 5 numbers here. Okay, 1, 2, 3, 4, 5.
Numbers are 1, 2, 3, 4, 5. Elements in reverse direction are 5, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Acha, okay. Listen. Okay, listen. Sai Kulkarni and everybody. As I said, if your n is a 5, then tell me where will be the last value. Okay, if your n is 5, then at which index you will get the last value? Tell me. And therefore you need to write n minus 1. Understood? Sai Kulkarni. Okay, understood now? So where you are asking? Tell me. Tell me the line number here. Tell me the line number. त्यापेक्षा अनम्यूट करायचं ना तिकडनं रिप्लाय ओके जर क्वेश्चन विचारायला यू कॅन क्लिक ऑन द अनम्यूट ओके इफ यू आर कन्फ्युज सो यू कॅन अनम्यूट और आस्क मी द लाईन नंबर ऍटलीस्ट या आधीच्या प्रोग्राम मध्ये तुम्ही ग्रेटर दॅन 0 घेतलं होतं बरं ठीक आहे आपण 1 मिनिट ओपन करतो बरं ओके बिफोर दिस प्रोग्राम टेल मी एव्हरीबडी I hope this program is clear, right? Accept any n number, accept the 5 number and display the 5 number in the correct direction and in the reverse direction. So 1 second, let me open that program. What the say is asking, we'll check that. मग इथे ग्रेट इक्वल टू 0 लिहिलंय आणि ग्रेटर दॅन 0 लिहिलं तर तुला 0th लोकेशनची व्हॅल्यू मिळणार नाही कारण की पहिली व्हॅल्यू कुठे असते 0 लोकेशनला असते मग तुला इथपर्यंतच व्हॅल्यू मिळेल कळलं का ही व्हॅल्यू मिळणार नाही समजलं कारण की ॲरेची इंडेक्स 0 ला सुरू होते काल होती का तू लेक्चरला ठीक हा that's right Shubham yeah ultimately your first value is at the 0th position in array your first value is at the 0th position therefore I am using here equal to 0 अगर तुमने ग्रेटर देन ही लिखना है तो -1 लिखो फिर चलेगा ये ओके गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्चुअली ठीक है नो प्रॉब्लम ठीक है ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है कल हम लोगों ने इसके ऊपर वी हैव स्पेंड 1 आवर राइट एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ 0 अंडरस्टूड तुम लोग को एक छोटा सा होमवर्क देता हूं मैं वाई स्टार्ट्स फ्रॉम 0 ओनली वाई नॉट फ्रॉम 1 ठीक है इसको सर्च करके आना आज देखते किसको आंसर मिलता है वाय एरे इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम अ 0 तू जसं म्हणते तसं रन जर केलं ना मी तर आउटपुट हे बघ हे येणार काय येणार 20 पर्यंतच येणार असं येणार आउटपुट कळलं का तुला हे बघ कंपाइल करतो मी आणि रन करतो एंटर एनी 10 नंबर्स 10 20 30 40 50 बघ 20 पर्यंत झालं आलं की नाही समजलं का सही येतं थोडंफार मला ठीक आहे लक्ष दे इकडे ओके फाईन so that is what I told you that is what I said here yeah if you are using greater than 0 so you will get last value this one right 20 okay you will not get the value which is at the 0th location clear and index starts from the 0 so you can put the equal to here or as Shubham said you can use -1 but still you will come you will get last value as 0 r is the distance from the first element of the array so no परत तीच मिस्टेक कर तू काल होती का नाही सांग मला लेक्चरला पहिले सही कुलकर्णी guys please read this doubt this is very important actually whatever she is asking right now it's very important हा तर मग आपण काय शिकलो सांग if you are taking the array of size 5 okay चलो tell me if my array size is 99 tell me the last index सही कुलकर्णी बाकीच्यांनी आन्सर नका देऊ थांबा तिला सांगू द्या if my array size is 99 tell me the last index ठीक है so when you say you have an array of size 99 so your first index काल आपण लिहून दिलं array index starts from 0 array index starts from 0
सो तुझं पहिली इंडेक्स येणार आहे, first index you will get at 0 and the last index you will get at 99 minus 1, that is 98. Understood? Always array index starts from 0 and the last index is n minus 1. ठीक आहे. सो उद्याच असे डाऊट विचारले असते ना, मी म्हटलो असतो की नाही तुम्ही म्हणजे काल जेवण करत होते लेक्चर मध्ये, असं बोललो असतो. पण आता काल तर 6 वाजता जेवण नसेल करत. ठीक आहे. So please listen carefully and if you have any doubt, please clear that doubt on that day itself, because in the next day session I'm using that previous day concepts. Okay, Namrata, do one thing. Today you can take a time and please, okay, everybody find out why array starts from 0. This is one of the interview question asked, okay, in one of the good company actually. So you can just check that why array starts from a 0. Chalo. This is one small self study assignment for you. ठीक है. हाँ, so always you remember one thing कि जब भी तुम लोग array डिक्लेयर करोगे, देखो अगर 100 साइज का तो लास्ट इंडेक्स 99 आएगा, अगर array डिक्लेयर करोगे 87 का तो लास्ट इंडेक्स 86 आएगा. क्लियर? तो array अगर 5 का होगा तो लास्ट इंडेक्स आएगा 4. ठीक है, आज के दिन सबको देखने दो. लेट्स फाइंड आउट दिस थिंग एवरीबडी. कॉपी पेस्ट ना करो फक्त. सी, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे. लेट्स कंटिन्यू नाउ. तो यहाँ पे array always starts from 0 and the last index is n minus 1. Okay, we'll discuss on that tomorrow. Today just let's focus on the program. Okay, let's go to next program now. You.c. So how many numbers do you want in array? तो चलो अभी इसको ओपन करते हैं हम लोग. File, open and the program. Here is the array of size 20. Okay, so यहाँ पे n ले लो and declare here hash define max is equal to 20. तो यहाँ पे 20 करो, max करो मतलब max. And then you can ask here enter how many elements do you want. Sorry, how many elements do you want in array. So as I said here, scanf के अंदर लिखेंगे %d, ampersand n. ठीक है. तो कितने नंबर चाहिए हमें? n नंबर. n मतलब कितने बोला मैंने? 10 नंबर. तो अभी क्वेश्चन क्या है कि इसमें से इवन नंबर कितने और ऑड नंबर कितने, इसको फाइंड आउट करो. So we need a variable here, even counter which is 0 and odd counter which is 0. So for loop area I is equal to 0, I less than यहाँ पे आएगा n तक, I plus plus. Scanf %d error of I. If error of I को मॉड किया अगर 2 से रिमाइंडर इज 0, देन इवन काउंटर प्लस प्लस एंड एल्स ऑड काउंटर प्लस प्लस. तो पहला नंबर यहाँ पे ले लो एग्जांपल. ठीक है. So numbers are 5, 6, 3, 9, 8, 11, 13, 44, 22, 13. ठीक है. So n is what right now? n is equal to 10. Okay. तो देखो सबसे पहले आता हे सांगायची गरज नाही ना सगळ्यांना. फर्स्ट नंबर I is 0, 0 less than a, what is the value? n is 10 right now. I less than 10. Read the first number, store at 0th position. So first number is 5 right now. ठीक है. फिर चेक करो कि 5 को अगर मॉड किया 2 ने, रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या? नहीं.
तो ये होगा प्लस प्लस become 1, then I becomes here 1, 1 less than 5, take the next number, I here right now 6 is there, 6 को mod करो 2 से, if remainder is 0, this become 1, I becomes 2, I here right now 3, 3 mod by 2 is 0, 3 mod by 2 is 0, no, take the number 3, 3 mod by 2 is 0, no, this become 2, I become 3, take the next number, I will go to this position, and there is a 9 right now, 9 को mod किया 2 ने, remainder is 0, no, then you will get this plus plus, I is 4 right now, so 4 is here, इसको mod किया अगर 2 से, remainder is 0, yes, so you will get this become 2, I is 5, so next number आएगा यहाँ पे, तो 11 is there, 11 को mod किया, remainder is 1, तो ये हो गया 4, ऐसे ही करोगे तो आगे समझ में आएगा, यहाँ पे I becomes 13, odd number plus plus, I becomes 14, odd number plus plus, sorry, even number plus plus, I plus plus here, I is here right now, even plus plus, finally I is here right now, 9 is less than 10, odd plus plus, so finally 1, 2, 3, 4 are the odd numbers, sorry, even numbers, and remaining are the odd numbers. तो यहाँ पे प्रिंट करो, प्रिंटर total even numbers are %d, comma even counter, and printer total odd numbers are %d, comma odd counter. ठीक है, तो %d even counter, %d odd counters. Check out one. Run this code. Enter how many elements you want. I said I want 10 elements. So enter element 6, 8, 9, 1, 2, 22, 24, 32, 21, 23, 53. So even number 5 and odd numbers are 5. 1, 2, 3, 4 and which one is that? 10, 5. That's it. Understood everyone? Please reply. This is clear? Please reply. Even number कितनी यानी odd number कितनी? Yes. Now you have to perform the addition also for the even number. What I want from you, okay? 5, 8, 9, 7, 9, 8, 8. Sorry. Oh, sorry. By mistake. Run this. How many numbers do you want? I said 10 numbers. तो भी नंबर को एंटर करो यहाँ पे, जैसे कि मैं देखो और करता हूँ 9, 9, 9, 9, 9, 9 ठीक है, वे 5 राइट, 6 अभी 1, 4, 4, 4, 6, ये देखो even numbers are 1, 2, 3, 4 and these are the odd numbers. Understood, Dhanashri? So I want you should print the sum also. Sum of, suppose answer कैसा आला पाहिजे बघा. So I want the answer like this. The sum of 4 even number is this and sum of odd 6 odd number is this. So क्या करेंगे उसके लिए? You can take two more variable, integer, even का sum which is 0 and odd का sum which is also 0. यहाँ पे अगर ये काउंटर हो रहा है तो इधर लिखो even sum is equal to even sum plus ARR of I. अगर ये वाला हो रहा है तो यहाँ पे लिखो odd का sum is equal to odd sum plus ARR of I. तो इससे क्या होगा, देखो पहला अगर नंबर तुम्हारे पास है, एग्जांपल नंबर्स आर 5, ओके 3, 4, 6, 8, 9, ओके 11, ऐसे अगर नंबर है तो देखो I 0 पे होगा तो 5 है, हाँ पहला नंबर कौन है 5, तो 5 को मॉड कर दिया तो रिमाइंडर आ गया 1, तो ये होगा 1 और ये यहाँ पे आएगा 0 प्लस
5 इज इक्वल टू 5, फिर I हो गया 3, नेक्स्ट नंबर इज 3, तो 3 को मॉड किया 2, तो दिस बिकम अ 1, तो पहले का सम था तुम्हारा 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है, फिर I बिकम्स 0 1 2, तो नंबर इज 4, 4 को मॉड कर दिया, ये हो गया 2, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, ठीक है, तो कहाँ तक आ गया हम लोग, 4 तक ना, नेक्स्ट नंबर आ गया 6, तो 6 को मॉड किया, सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी आई फॉरगॉट दैट, ठीक है, या सॉरी दैट इज ऑर्डर, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू, ठीक है, बघतोय मी कोणाचं लक्षात, ठीक आहे, फाइन, so this is 5 plus 3 is 8, here we got 4, okay, so 0 plus, okay, so here is 0 plus 4 is equal to 4, then there is a 6, 4 plus 6 is equal to 10, then next is we have 8, again even counter becomes plus, 10 plus 8 is equal to 18, then we have 9 here, तो ये हो गया कितना भी 3, okay, 1 2 and 3, so 8 plus 9 is equal to 17, so continue this, understood everybody, so total even numbers are this, and sum is comma even का sum is equal to this one, similarly total odd numbers are this, and sum is can be comma odd का sum, ठीक है, that's it, and the code, and then this code, enter any how many numbers you want, and I said 4 5 7 9 8 9 9 3 2 6, तो देखो इवन नंबर का सम इतना है, ऑड नंबर का सम इतना है, that's it, understood everyone, that has defined मतलब एक इसको बोलते कांस्टेंट, डिक्लेयर अ कांस्टेंट, ठीक है, सोनाक्षी, दिस इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट, तो मैंने एक डिक्लेयर कर दिया मैक्स वैल्यू, इस वैल्यू को तुमने यहाँ पे यूज किया, तो मतलब 20 साइज का एरे एलोकेट किया हमने यहाँ पे, अंडरस्टूड, अगर तुम्हें 20 का नहीं चाहिए तो यू कैन हार्ड कोडेड पुट द वैल्यू 5 और 10, बट इन लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर हमें n से वैल्यू मतलब एरे का साइज यूजर से लेना है, तो एटलीस्ट इनिशियली यू नीड टू डिक्लेयर सम आर्बिट्ररी साइज, initially you need to declare the arbitrary size 20, and then I am asking user how many numbers do you want, yes you can take anything, Akash, no problem, clear, only throughout the program use this variable, clear, okay, this is just meaningful variable I am taking ARR, understood, we are just using meaningful name ARR, but you can take anything, like somebody can take n, someone can take a, but that is by habit I am always using the meaningful variable, okay, suppose x equal to 20 and array of x scalar, sir x एक मिनट, suppose x equal to 20 and array of x scalar, sir, and x is in, so मग काय याचा अर्थ काय, पण what you are asking नम्रता, x is equal to 20 and array of x means to 20 चा array allocate केला, तर x is in, no, I think Namrata you are like adding the Python in the C programming, right? That's right, okay Namrata, fine, so integer म्हणजे in short you are asking max इथे लिहायचा, declare the max here instead of declaring over here, right ना, हाँ, only difference is that Namrata कि ये जो वैल्यू होता है ना इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बट इसको हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं, अगर किसी ने यहाँ पे नीचे जाके लिख दिया कि नहीं मैक्स इज इक्वल टू ओनली 5,
और यहाँ पे तुमने बोला कि आई वांट n नंबर, n तुमने बोला 10, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना यहाँ पे। अंडरस्टूड? तुमने यहाँ पे मैक्स को कर दिया 5, पर तुमने पहले बोला था कि मुझे n चाहिए 10, ऊपर मैक्स था 20। अंडरस्टूड? हियर यू कैन चेंज, तो ये गड़बड़ करेगा, ये यहाँ पे ये बोलेगा मेरे पास अभी इंडेक्स है ही नहीं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बट आई डोंट हैव द इंडेक्स 5 6 7, बिकॉज तुम्हारा मैक्स 5 है, मैक्स मतलब एरे का साइज 5 कर दिया तुमने। अंडरस्टूड? कर लगा प्रॉब्लम का है? एवरीबडी यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? अगर स्टार्टिंग में मैक्स 20 लिखा, यहाँ पे 20 यूज होगा, किसी ने बोला मुझे नंबर चाहिए 10, ओके, बट somebody said max is 5, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। लेट मी जस्ट रन दिस प्रोग्राम, कंपाइल द कोड एंड चेक करो इसको। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा सपोज साइज 10, ओके, और नंबर एंटर करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसने क्या किया, ये देखो 2 6 12, ये तो सही आ गया, ठीक है यहाँ पे। हाँ, तो लॉजिकली हुआ क्या कि जो मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, ओके, कल मैंने तुम्हें बोला था कि एक बार एरे डिक्लेयर कर दिया तो यू कैन नॉट चेंज दैट। अंडरस्टूड एवरीबडी? यहाँ पे एरे 20 साइज का डिक्लेयर हो गया, तो यू कैन नॉट चेंज दैट, यू कैन नॉट श्रिंक एंड यू कैन नॉट एक्सटेंड द साइज ऑफ द एरे। तो बट ये मैक्स तो चेंज हो गया, बट ये मेमोरी अलोकेटेड हो गया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, max is 5 but your memory is a max is 5 but memory is already allocated for the 20 element। तो एक्चुअली ये लॉजिकली ये करेक्ट नहीं लग रहा है ना, तो इसलिए इसको कांस्टेंट लिखते हैं। अगर ये कांस्टेंट होता यहाँ पे, लिसन, अगर ये कांस्टेंट होता, कांस्टेंट को चेंज करके तो एरर आएगा। अगर मैक्स को अभी चेंज करोगे तो यू विल गेट एरर। चेक दिस, हे बघा एरर आली, काय सांगते तो, दिस इज अ कांस्टेंट, यू कैन नॉट चेंज हियर। अंडरस्टूड Namrata? Therefore, I am declaring max here, not over here. Understood? Nobody should change the size of the array. You got my point? Please reply. ठीक है, चलो। तो हाँ, क्या क्वेश्चन था तुम्हारा शुभम? कैन यू प्लीज टेल मी वंस अगेन? Finally, can we categorize those number in a separate even and separate odd numbers? Because in this we just counting. Yes, you can categorize. Means you want the even number separately and odd number separately. Am I right? You want the even number in the separate and odd number in the separate. सॉर्ट करना है उसको अलग अलग। हाँ, तो उसके लिए हमें 2 और एरे की जरूरत है। ओके, यू नीड टू टेक 2 more array for that. Okay, to keep the even number separately and to keep the odd number separately. So I'll tell you that tomorrow. Don't worry. Okay. So आज के जो programs है, that these are like basic programs. You can say that कि सबसे पहले क्या क्या किया हम लोगों ने, but you can try that. Everybody, you can just remember the question what Shivam is asking today. So if anybody can able to store the even number separate array and odd number separate array, okay, you can try to print that, ठीक है, separately. So accept any 10 numbers and display the numbers as it is. Second, accept any 10 numbers and display in reverse direction. ठीक है, उल्टा प्रिंट करो इसको। Third one is accept any 10 numbers and count how many even and odd numbers are present in array. Also print the sum. Fourth one is accept any 10 numbers and print all the numbers which are greater than even numbers. Fifth one is accept any 10 numbers and display accept any 10 numbers and display and count how many numbers are
divisible by 5 and 3 or divisible by 5 or divisible by 3 or not divisible by 5 and 3. So चलो please accept enter numbers which are greater than the average of all the numbers. Example लो, accept any 10 salaries number की जगह and print all the salaries which are greater than average of all the salaries. Understood everybody? Accept any 10 salary जैसे कि 5,000, 10,000, 9,000, 7,000, 2,000 उसका एवरेज निकालो और ऐसे सैलरी को प्रिंट करो जो कि एवरेज के ऊपर है. So try these 5 programs today and also write down in your notebook. Tomorrow we'll continue. ठीक है?